देखो आज आम नुआ चैप्टर पढ़ा दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहले कोन घर्षण। ओके तो व्हाट इज फ्रिक्शन ना एटा हला गोटे सरफेस ए सरफेस ऊपर गोटे बॉडी थिला बुझेला जेते बेले मन करो एफ अमाउंट मन करो आमे एकोड को एफ अमाउंट रो फोर्स पकेले बुझेला जेते बेले एफ अमाउंट रो फोर्स पकेले ए कांटेक्ट सरफेस रे कोन हला ना घसी हला कांटेक्ट सरफेस रे कोन हला घसी हला बुझेला ए जो घसी हला हम कोन दी घर्षण तो या कोन साइंटिफिक लैंग्वेज रे कोन कहबा ना व्हेनेवर ए बॉडी slides over a surface or moves over a surface then a tangential opposing force is developed at the contact surface a contact surface रे गोटे tangential opposing force रे develop करे तो या को हम फ्रिक्शन रे बुझेला जदी गोटे बॉडी रे गोटे सरफेस ऊपर मूव करे किबा मूव करिया को चेष्टा करे ताहाले ए कांटेक्ट सरफेस रे गोटे tangential opposing force रे डेवलप करे थारे ए tangential opposing force को हम फ्रिक्शन बोली कहते बुझियाला तो व्हाट इज फ्रिक्शन ना इफ ए बॉडी moves or tends to move over a surface then a tangential opposing force is developed at the contact surface that is called as ता कौन कहा जाए रे फ्रिक्शन बोली कहा बुझे ताहाले एबे कथा को जे व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कोन ना जो फोर्स ता फ्रिक्शन कराए से फोर्स का हम कहते फ्रिक्शनल फोर्स बुझेला ना बुझेला ना ताहाले एबे फ्रिक्शनल फोर्स कोटा एटा हला फ्रिक्शनल फोर्स बुझेला तो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड द फोर्स which causes friction the force which causes friction is called as frictional force okay frictional force रो फार्मूला है F is equal to mu into Rn F is equal to कोन होला mu into Rn mu को हम कोन कहती coefficient of friction कोन कहती रे coefficient of friction और Rn को हम कोन कहती रे ना सर नॉर्मल रिएक्शन को जाना कहता कोन कहता दे नॉर्मल रिएक्शन एबे तमे मते पचरिबो एठी नॉर्मल रिएक्शन केते देखो ए बॉडी रो मास रा m ताले वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड देन नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ताले आमे कहि परिबा Rn w this is equal to mg this is equal to mg बुझियाला ताले फ्रिक्शनल फोर्स म्यू हला कोन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एडा गोटे सरफेस रो गोटे प्रॉपर्टी एडा होची कोन गोटे सरफेस रो प्रॉपर्टी जनरली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रो वैल्यू 0 रो 1 भीतर रही केते केते भीतर 0 रो 1 भीतर रही बुझियाला ना बुझियाला एबे तुमको फ्रिक्शन रो एग्जांपल कोन ना देखो ड्यू टू फ्रिक्शन ए फुटबॉल कम्स टू रेस्ट तब गोटे फुटबॉल को ओइठारे मारलो फुटबॉल टा गड़ी होला किछि दूर गला पर से धीरे धीरे स्लो होए आ रहि जाय बुझेला एडा का एग्जांपल कोन ना कहली ड्यू टू फ्रिक्शन ए फुटबॉल कम्स टू आ कोन ए फ्रिक्शन पाई बोली हमरो ए जो तमे साइकिल चलो किबा गाड़ी चलो वर्षा दिन से सब विभिन्न प्रकार साउंड बारे के कटर पर और होना नहीं ड्यू टू फ्रिक्शन there is the wear and tear of the machinery is takes place
कौन कहली ड्यू टू फ्रिक्शन wear and tear of the machinery is experienced machinery ro wear and tear बुझेला तो फास्ट हम पढ़ले फ्रिक्शन कहा को कहंती तापर फ्रिक्शनल फोर्स कोन पढ़ले तापर फ्रिक्शन रो एग्जांपल भी पढ़ले बुझेला तापर हम देखबा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कोन देखबा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन ना हला दी प्रकार बुझेला कोन कोन ना गोटे हला स्टैटिक फ्रिक्शन आ गोटे हला हमर डायनामिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन तमे मते पचारिबो कि सर आपण तो कहले बॉडी मूव न कले फ्रिक्शन होय स्टैटिक कंडीशन माने बॉडी तो रेस्ट कंडीशन न तो कोन फ्रिक्शन होय हां होय बुझेला तो कोन स्टैटिक फ्रिक्शन ना गोटे बॉडी रेस्ट कंडीशन रे थिला तमे एकड़े एफ अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करो किंतु फोर्स अप्लाई करिया फल रे बॉडी कोनसी प्रकार घुचिला नाही कोनसी प्रकार घुचिला नाही ता माने कोन ना सर एई पछाड़ को केही ना केही गोटे फोर्स पकोछि जो फोर्स ता की हमरो अप्लाइड फोर्स सहित समान होछि जा फल रे की ए बॉडी रो कोनसी प्रकार मूवमेंट हो नाही जदि आमु फोर्सटा अधिका हि थांदा ताहले ए बॉडीटा आमार को मूव करिया को लागि था माना नै तो एई भली फ्रिक्शन पान कोनती स्टैटिक फ्रिक्शन कोन कोनती स्टैटिक फ्रिक्शन बुझियला तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ना इफ द फ्रिक्शन exists in between the two surfaces and the two surfaces is in rest condition the two surfaces is in rest condition बुझियला ना बुझियला क्लियर जदि दुईटा जाक सरफेस रेस्ट कंडीशन रे थांती एवं फ्रिक्शन हुए ताले सेही भली फ्रिक्शन को हम कहते स्टैटिक फ्रिक्शन कोन कहते स्टैटिक फ्रिक्शन बुझियला तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन ना if the friction exists in the static condition of the body then it is called as the कौन रे स्टैटिक फ्रिक्शन बोले हमें कहता क्लियर समझते ए डायनामिक फ्रिक्शन कौन ना if the friction exists in between the two surfaces and the two surfaces are in motion condition ता माने गोटे बॉडी दे एटा हला गोटे बॉडी एटा हला गोटे सरफेस तमे एफ अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करलो ताहले ए बॉडीटा कोन कला मूव करिया फल रे ए कोन ला ऑब्वियसली फ्रिक्शन हो ना होबा नै तो ए जो फ्रिक्शन ला है ताको कहते हमें डायनामिक फ्रिक्शन कोन कहते डायनामिक फ्रिक्शन व्हाट इज डायनामिक फ्रिक्शन ना if the friction exists in the dynamic condition of the body static बदल कोन कहबो dynamic condition of the body then the friction is called as dynamic friction से फ्रिक्शन काम कोन कहते डायनामिक फ्रिक्शन बोले हमें कहता क्लियर ए डायनामिक फ्रिक्शन हला तीन प्रकार केते प्रकार तीन प्रकार कोन कोन ना गोटा हला रोलिंग फ्रिक्शन गोटा हला स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गोटा हला फ्लूइड फ्रिक्शन कोन फ्लूइड फ्रिक्शन बुझियला क्लियर बुझिला ना केते प्रकार अछि तीन प्रकार कोन कोन गोटा हला रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ फ्लूइड फ्रिक्शन बुझियला वन बाय वन हमें देखिबा हबो एतिका गोटे देखि दियो नेक्स्ट देखिबा फर्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन rolling friction so what is rolling friction now whenever a body rolls over a surface
whenever a body rolls over a surface then friction exists जदि गोटे बॉडी टे गोटे सरफेस रे रोल करे ताहले फ्रिक्शन हे थाए ए बॉडी फ्रिक्शन को आमे कहंती रोलिंग फ्रिक्शन बुझेला तो व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन ना if a body rolls over a surface then कौन हुए ना फ्रिक्शन exists that is called as कौन कहा जाता को रोलिंग फ्रिक्शन बोली कहते हैं क्लियर सेम वाले भाବରେ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एटा हला गोटे इंक्लाइंड सरफेस पे ए इंक्लाइंड सरफेस रे पडिला कोन होची ना खसुची तो छुआ माने जो खसंती शिशु ध्यान रे थाए कोन सेटा स्लाइडर तो से माने खसिबा समय एठी फ्रिक्शन ना ए जो फ्रिक्शन ना हुए ना हम कहते स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन कहते स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना if a body rolls बदल में तो स्लाइड if a body slides over a surface then friction exists such type of friction is called as sliding friction okay next one is fluid friction what is fluid friction and देखो ये हला पानी रे कोन है जे ना गोटे डंगाटे जाउ पानी रे लोपड़ा ताले डंगा आ पानी में भीतर कोन हुए ना फ्रिक्शन हुए बुझिया तो ए बॉडी फ्रिक्शन का हम कहते फ्लूइड फ्रिक्शन whenever a body flows over a surface whenever a body flows over a surface then friction exists एटा कहलो whenever a body rolls over a surface एटा कहलो कोन whenever a body slides over a surface एटा कोन कहबो whenever a body flows over a surface then friction exists that is called as fluid friction ता कोन कहते हमें fluid friction बोले हम कहता बुझियाला तो टिके हमें फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर टिके एनालिसिस करबा हैला फ्रिक्शनल फोर्स देखो फ्रिक्शनल फोर्स ताहले देखो तुमको मु कहली कि जो फोर्सटा फ्रिक्शन कराए से फोर्स को हमें फ्रिक्शनल फोर्स बोली कहता जो फोर्सटा कोन कराए फ्रिक्शन कराए से फोर्स को हमें फ्रिक्शनल फोर्स बोली कहता क्लियर तो एबे एटा हला गोटे सरफेस ए सरफेस रे गोटे बॉडी थिला से बॉडी रो मास हला m बॉडी रो मास केते ना m ताहले मते को weight of the body is always acting vertically downward then normal reaction is acting perpendicular to the surface तो मने करो f amount of force रे हमें बॉडी को राइट साइड को टाउन थिले ताले फ्रिक्शन हो पड़े ना टेंजेंशियली ऑपोजिट ता माने टुवर्ड्स लेफ्ट को काम करिवो क्लियर ताले फ्रिक्शनल फोर्स रो फार्मूला कोन तुमको कहले F mu into Rn F केते कहली mu into Rn बुझियला ताले फ्रिक्शनल फोर्स का ऊपर डिपेंड करे ना फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स को फैक्टर फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करे फर्स्ट फैक्टर इज नॉर्मल रिएक्शन फर्स्ट फैक्टर वाला कोन नॉर्मल रिएक्शन बुझेला तो देखो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन ता माने नॉर्मल रिएक्शन दा बढ़ले फ्रिक्शनल फोर्स ता बढ़लो बुझेला सेकंड रे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करे नेचर ऑफ द सरफेस नेचर ऑफ द सरफेस नेचर ऑफ द सरफेस कहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बुझाए नॉर्मल रिएक्शन कहले Rn को बुझाए बुझेला ना बुझेला अरे बुझेला ताहले को फैक्टर फ्रिक्शनल फोर्स पाई रिस्पांसिबल फर्स्ट ला नॉर्मल रिएक्शन सेकंड रे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट मींस नेचर ऑफ द सरफेस थर्ड रे का ऊपर डिपेंड करे थर्ड रे आसला रफनेस और
पॉलिशनेस ऑफ द सरफेस हां रफनेस ऑफ द सरफेस हां रफनेस ऑफ द surface or actual contact area or that is called as actual contact area actual contact area ऊपर डिपेंड करे जो सरफेस टा जेते रफ होई दिबो सेडी फ्रिक्शन टा सेते भलो हबो बुझेला ना बुझेला नै क्लियर ए सब फैक्टर ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करे कोन कहली नॉर्मल रिएक्शन नेचर ऑफ द सरफेस आउट एक्चुअल कांटेक्ट एरिया और रफनेस ऊपर डिपेंड करता है जदि रफनेस टा बढ़िबो ताले फ्रिक्शनल फोर्स बढ़िबो बुझेला कोन कहली जदि रफनेस टा बढ़िबो ताले फ्रिक्शनल फोर्स बढ़िबो जदि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़िबो ताले फ्रिक्शनल फोर्स बढ़िबो जदि नॉर्मल रिएक्शन बढ़िबो ताले फ्रिक्शनल फोर्स मध्य बढ़िबो क्लियर समझते ए पर्यंत क्लियर ना बुझियाला नहीं अब देखि देली नेक्स्ट देखते हैं हमें फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स फ्रिक्शन इज a self adjusting force काहे कि हमें फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोली कहता देखो गोटे वुडन ब्लॉक थिला तार मास थिला m क्लियर दिस वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस से गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस रे प्लेस करा हेतला इट इज पासेस ओवर ए पुली फोर पास हेतला रे गोटे पुली द्वारा पास ए पुली द्वारा पास हेतला बुझेला ए वुडन ब्लॉक रो गोटे एंड रे कोन लागितला ना गोटे सूता लागितला और दौड़ी लागितला से दौड़ी रे गोटे वेट पैन रे लागितला एडाला वेट पैन बुझेला ए वेट पैन रे हमें डिफरेंट अमाउंट रो वेट को प्लेस करन बुझेला आ बुझेला क्लियर तो एबे हमें देखिबा काहे कि फ्रिक्शन को गोटे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बोली कहन बुझेला ताहाले एबे मते कुहो एठी कोन कोन फोर्स पड़ुची now weight of the body is always acting vertically downward W is equal to mc then normal reaction is always acting perpendicular to the surface ए weight पैन रे हमें कोन करंती ना डिफरेंट अमाउंट ऑफ weight को हमें प्लेस करथां बुझियला तो मने करो गोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ weight को प्लेस कर देखो तीनटा केस देखियो गोटे सला जदी हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ weight को प्लेस करबा it is a small amount of weight place करिया in comparison to the wooden block ताहाले कोन हबो ना the block does not slide block ता कोन करिवो स्लाइड करिवो की block does not slide जदी सेकंड कथा ला कोन एठी जो वेट टा प्लेस करिया जदी तार वेट ब्लॉक रो वेट सहित समान हो ताले ये स्लाइटली माने डिस्प्लेस हो कोन हो स्लाइटली जस्ट टिके डिस्प्लेस हेले हो बुझेला नहीं इफ द weight is equal to the weight of the block then ये कोन हो स्लाइटली स्लाइड जदी एटा गोटे लार्ज अमाउंट रो वेट के प्लेस करिया ये कोन हो ना पूरा पूरी स्लाइड करियो बुझेला तो मने करो एडी जो वेट पाइन बोली फोर्स पड़ला p केते फोर्स पड़ला p ताहले ये कोन हो ना राइट साइड को मूव करियो जदी ये राइट साइड को मूव करियो ताहले फ्रिक्शन हो को साइड को लेफ्ट साइड को फ्रिक्शन हो लेफ्ट साइड को फ्रिक्शन हो ताहले एठी कोन कोन नेट फोर्स एठी कोन कोन टोटल फोर्स पड़ी टोटल फोर्स कहले नेट फोर्स इज इक्वल टू p प्लस केता बकुआ फ्रिक्शनल फोर्स प्लस rn पड़िबो आउ के पड़जी रे ना w पड़जी
बुझेला किंतु एठी हमर केवल हॉरिजॉन्टल मोशन होची वर्टिकल मोशन हो नाही तेन कर जेहेतु हॉरिजॉन्टल मोशन होची वर्टिकल मोशन होउनी तेन कर rn plus w is equal to 0 rn plus w is equal to 0 ताले एठे नेट फोर्स केते रहला नेट फोर्स केते रहला को p plus f बुझेला at equilibrium नेट फोर्स केते हेता 0 हेता जदि नेट फोर्स ता 0 p plus f is equal to 0 ताले f is equal to केते हला -p तमान हमें जेते अधिक अप्लाइड फोर्स करबा सेते अधिक फ्रिक्शनल फोर्स हो सेते अधिक फ्रिक्शनल फोर्स हो तेनो कर फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स तेनो करी कोन कहले फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बुझियला क्लियर समझते अरे क्लियर लगी हबो समझते क्लियर नाही कि फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहा जाए ना हमें जेते अधिक अप्लाइड फोर्स करबा फ्रिक्शनल फोर्स ता सेते अधिक हेता सेथि पाई बोली हमें फ्रिक्शन को कोन की होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कोन कहती सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बुझियला ना बुझियला नेक्स्ट हमें देखिबा नेक्स्ट कोन देखिबा ना हम गोटे ग्राफ जदी प्लॉट करबा का भीतर एकड़े नबा अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस रे वाई एक्सिस रे नबा फ्रिक्शनल फोर्स जदि हम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स भीतर गोटे ग्राफ प्लॉट करबा हमें देखिबा कि जदि अप्लाइड फोर्स ता इंक्रीज करूची ताले फ्रिक्शनल फोर्स ता भी इंक्रीज करिवो बुझियाला से इंक्रीज करी करी कोन हबो ना गोटे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करिवो कोन करिवो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करिवो ए जो मैक्सिमम वैल्यू रा अटेन करे ताकू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन ता कोन कहते लिमिटिंग फ्रिक्शन बुझियाला आफ्टर दिस वैल्यू then it will gradually reduces and remains constant तो एटे जो फ्रिक्शन ला थाए ए फ्रिक्शन ला कोन कहते स्टैटिक फ्रिक्शन कोन कहते स्टैटिक फ्रिक्शन एटे जो फ्रिक्शन ला थाए एटा कोन कहते डायनामिक फ्रिक्शन कोन कहते डायनामिक फ्रिक्शन ताहाले जदि कोन करली ना इफ वी प्लॉट a graph between applied force and frictional force whenever the applied force increases then frictional force is also increases then it will reaches the maximum value the maximum value of static friction is called as limiting friction तापर से कोन हुए ना ग्रेजुअली रिड्यूस हो साला पर कांस्टेंट हो जाए ये जो कांस्टेंट हुए जो फ्रिक्शनल फोर्स ता कोन कहते डायनामिक फ्रिक्शन ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो हुए जो फ्रिक्शन ता एटा कहते स्टैटिक फ्रिक्शन एबे कथा उठु जी ये मैक्सिमम वैल्यू रो स्टैटिक फ्रिक्शन को कोन कहा जाए ना दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन कोन कहती रामे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोले हमें कहथांती द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन बुझेला ना बुझेला नहीं क्लियर समझते एबे कथा उठु जी व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें कहां को कहते limiting friction कोन ना it is the maximum value of static friction it is the maximum value of static friction at which there is no relative motion between the surfaces there is no relative motion between the surfaces बुझियला ता माने एटा ह गोटे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रे ता माने गोटे सरफेस रे गोटे बॉडी थिला ए बॉडी रे केते मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हेले ए बॉडी रो कोनोसी प्रकार मोशन हबो नाही से फ्रिक्शनल फोर्स ता हम कहते लिमिटिंग फ्रिक्शन बुझेला और बुझेला ताहले ए जो फ्रिक्शनल फोर्स ता एटा कोन हेताय गोटे मैक्सिमम वैल्यू हेताय कोन हेताय मैक्सिमम वैल्यू हेताय तो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन ना इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ it is the maximum value of static friction
at which there is not any relative motion between the surfaces is x plus. There is not any relative motion between the surfaces is x plus. बुझेला surface मानक मध्य कौन सी relative motion हुए नहीं ताको हम कौन कहते limiting friction बोले हमें क्लियर ना क्लियर है ना अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टा का ऊपर डिपेंड करे ना देखो F max is equal to say same mu into Rn. F max is equal to कहते हैं ना mu into Rn. बुझेला किरे F max is equal to कहते हैं ना mu into Rn. किंतु 88 आपको लिखा जाए mu s कौन लिखा जाए mu s एटा कौन ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तेनु करी स्टैटिक फ्रिक्शन पाई बोली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें लगांती दैट इज mu s बुझेला ताहले लिमिटिंग फ्रिक्शन रो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन प्रॉपर्टीज तमे प्रॉपर्टीज कहि पारो और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कहि पारो फर्स्ट कथा हला कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टेंजेंशियली ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी बुझेला आ बुझेला माने फ्रिक्शनल फोर्स ता सबु बेले टेंजेंशियली ऑपोजिट डायरेक्शन रे काम करे इन द मोशन ऑफ द बॉडी बुझेला फर्स्ट कथा हम कहली ना फ्रिक्शनल फोर्स the force of limiting friction the force of limiting friction is always acting in the opposite direction of motion of the body opposite direction of the motion of the body बुझेला सेकंड कथा हला कोन सेकंड कथा हला कि the force of limiting friction depends upon the nature of the surface का पर डिपेंड करता है nature of the surface the maximum value of or the force of limiting friction का ऊपर डिपेंड करे नेचर ऑफ द सरफेस ऊपर डिपेंड करे नेचर ऑफ द सरफेस ऊपर डिपेंड करे आ कोन ना फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दा डिपेंड करे एक्चुअल कांटेक्ट एरिया का ऊपर डिपेंड करे एक्चुअल कांटेक्ट एरिया बुझेला किंतु it is independent of shape and size of the surface कौन कहली independent of shape and size of the surface रो shape और size पर डिपेंड करे नहीं बुझेला तो सरफेस का को भली शेप रो से ता ऊपर डिपेंड करे नहीं बुझेला ना नहीं आ गोटे कथा कि जदि गोटे लार्जर फोर्स ता माने ए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर डिपेंड करे कोन कहले फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन depends upon normal reaction that means larger amount of force is required to move a larger body कोन कहले larger amount of force is required to move a larger body गोटे लार्जर बॉडी को मूव करया पाई लार्जर अमाउंट ऑफ फोर्स हमको दरकार पड़ता है काहे के एमती हुए ना देखो
F is equal to आमे कहले mu into Rn ताले mu into Rn टा का सहित समान mg सहित समान अरे होना नहीं यदि मास टा बड़ हबो ताले फ्रिक्शनल फोर्स टा कोन हबो बड़ हबो मास टा यदि बड़ हबो कोन हबो फ्रिक्शनल फोर्स टा भी बड़ हबो तेनो करी गोटे बड़ अमाउंट रो मास को गुचेबा पई गोटे बड़ अमाउंट रो फोर्स दरकार पड़े सेति पई बोली कोन हला ना फ्रिक्शनल फोर्स टा डिपेंड करे का ऊपर ना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर डिपेंड करता है बुझेला ना बुझेला नहीं तो ए ग्राफ को समस्त बुझी पालो जदि हम गोटे ग्राफ ड्रा करबा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स भितर जेतरे अप्लाइड फोर्स टा इंक्रीज करे ताले फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज करे तो से कोन करे ना गोटे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करे ए जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करे सेते बेले से जो फ्रिक्शन ना थाए से फ्रिक्शन ना कोन कति स्टैटिक फ्रिक्शन ए स्टैटिक फ्रिक्शन रो अदर नेम हला कोन लिमिटिंग फ्रिक्शन ए लिमिटिंग फ्रिक्शन अटेंड कर साला परे कर्व टा ग्रेजुअली कोन हुए रिड्यूस करी कोन हुए कांस्टेंट हुए जेते बेले से कांस्टेंट हुए ताको हम कहते डायनामिक फ्रिक्शन तो अबे कथा होची लिमिटिंग फ्रिक्शन कोन लिमिटिंग फ्रिक्शन होची मैक्सिमम वैल्यू रो स्टैटिक फ्रिक्शन जोठी देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस मान को मध्य रे कोन से रिलेटिव मोशन हुए नाही तापर हमें आसले तार फार्मूला कोन ना F is equal to mu s into Rn mu s कोन पाई लिखली ना स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक ता माने रेस्ट हमरो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी प्रकार हमें पाइबा गोटे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ए कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन हमें पाइबा बुझेला तो डायनामिक फ्रिक्शन एठी जेहेतु रेस्ट कंडीशन अछि तेन पर हमें लगे दे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तापर तार प्रॉपर्टीज कथा कहली कि ए जो force of limiting friction is always acting opposite direction tangential opposite direction to the motion of the body the force of limiting friction depends upon nature of the surface तापरे actual contact area किंतु shape and size ऊपर डिपेंड करे नहीं नॉर्मल रिएक्शन ऊपर डिपेंड करता है ये सब होला तार प्रॉपर्टी बुझियला और कैरेक्टरिस्टिक्स जहां भी कोई बात हबो देखि दियो